last sunset of the year 2023, 31st December. Happy New Year from Antara. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year. हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही हूँ अंतरा पे विथ ऑल दीज न्यू फ्रेंड्स, इसके पीछे की कहानी शुरू होती है 2 दिन पहले ऑन 29 दिसंबर 2023। I am a hunter. मेरा हंटर। और हम लोग जा रहे हैं, सॉरी मैं जा रही हूँ सेलिंग पे फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, मुंबई टू गोवा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर डेविड और इन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है बॉम्बे टू गोवा सेलिंग। और जो मैं जा रही हूँ अंतरा में, अंतरा एक यॉट है। जैसे हम लोग पुराने ज़माने में जाते थे, पूरे के पूरे विंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता था अपना यात्रा, बोट से जो जाते हैं हम लोग वो, तो सेम वैसे ही मैं जाने वाली हूँ। अंतरा के बारे में आपको बाद में बताऊँगी। आ जाओ, अंतरा पे जाएंगे। अंतरा एक ब्यूटीफुल वैंडे स्टार डच डिज़ाइन सेल बोट है और पहली ऐसी बोट है जो सर्टिफाइड है एज ओशन गोइंग याट। इसके स्कीपर है कैप्टन दिलीप डोंडे सर और फर्स्ट मेट है सुचेता जादव जी। और हमारा क्रू ऑलरेडी आ गया है। हाय सुचेता, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है वहाँ पे। ओह माय गॉड, दिस इज सुचेता एंड सर मीनाक्षी हियर, दिलीप डोंडे हमारा कैप्टन है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो दिस इज ऑल माय टीम हियर अगेन। मेरे बैग स्क्रीन करके डेविड से विदा लेके मैं जा बैठी छोटी सी नाव में जो मुझे लेके गई अंतरा तक। दूर से ही अंतरा को देखा तो मन में सागर जैसी लहरें उठने लगी। थोड़ा सा डर, थोड़ी उत्कंठा, थोड़ी रोमांचकता, सब भाव साथ में। ये चढ़ गई मैं अंतरा पे। बोट का एंकर उठा के मेनसेल और फोरसेल को मास्ट पे चढ़ा के हमारे कैप्टन ने अंतरा को रेडी किया और हम चले अपनी रोमांचक यात्रा पे। कैप्टन दिलीप डोंडे इज़ द फर्स्ट इंडियन सोलो सर्कमनेविगेटर। उन्होंने अपनी पहली सोलो सर्कमनेविगेशन सेल की थी 2010 में ऑन द INSV मादेई। उसके बाद उन्होंने 7 इंडियन सर्कमनेविगेटर्स को ट्रेनिंग दी। नेवी से रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी सेल बोट यात्रा जारी रखे हुए हैं और हम जैसे नए लोगों को अंतरा पे यात्रा करने का अवसर देते हैं। उनकी साहस भरी कहानियां सुनते सुनते अंतरा पे समय का पता ही नहीं चलता है। That's the galley, as the kitchen is called. It's got a gimbal to it, so it swings along with the motion of the water. I have a menu set for the trip, and I expect all of you to help with whatever we are doing. Whether it's just sitting up and cutting and chopping, whatever, everybody does that, and helps with the dishes after that. Also, we take turns in cleaning and doing the dishes. In terms of food, I'll just show you stuff you are familiar with it. We've got coffee and sugar jug. We've got the masala, artificial masala box with most other sauces and ingredients here. This is the freshwater tap, only to be used for eating and drinking, cooking and drinking. Yeah. To operate the freshwater tap, there is a pump here. Press the pump, you get water from here. Yeah. And all other times for anything else, even for washing the burtan once you're out at sea, this is the seawater tap. This is the seawater tap. Toilet over here. Sorry. This is toilet. I have to wash my hands again. And this lever you have to press it back, and this pump you have to push. So the waste will go to the sea, and if you pull it in front, the water will come. See, the water is gathering. This is the toilet facility. Keep it back, keep it close. Sleeping arrangement. 1, 2. This is skipper's bed. 1, 2,
3, 4, and one more lavish sleeping arrangement here inside. And these are the arrangements, storage arrangements. All of these. Where you can always keep our luggage. And we have just seen the inside. These are windows. My bed is here. I'm sleeping here. And out. This is Gaurav here. Hi Gaurav. Hey, hi. Just having a small tour. Promotion. So, the staircase to go under the Salt on his. cockpit mainly. Telling him. One seating arrangement, yoga mat is good because the surface here down is very rough. As you can see, you are bound to get It's rough on purpose so that you don't slip. our skipper, Mr. Dilip Donde, and Sucheta, first mate. This is, Manan. Ouch. Hi. Sanjay. yeah. Thank you guys, and this is the beautiful sunset you can see. Good tease. Cheers, cheers. with tea, cheers. With chas also. With chas, cheers. So tea time Tea time. on Antara. Hi friends, and see where I'm sitting. I'm not feeling here as of now. You can say that I'm sitting on a bow. Okay, this is Antara's bow. Anchor in front of me, and the part where I'm leaning is Whirler of the Genoa. Thank you, Sucheta. The beautiful view you can see from here, and I have enjoyed this. This is a 3 days tour actually, 3 days sail from Mumbai to Goa. So we have come ahead of Murud, Sucheta. No, we'll be reaching there around 10 o'clock tonight. So we'll reach Murud around 10:30. This is first day is kind of over, but still night party is still on. So our dinner is getting ready. Some healthy salad, and Sucheta is making it. I'm just recording it, not helping her. Yeah, come on. And it will be serve and this will be for The soup and bread. We're having yeah, soup and masala yeah, bread. and the breads are getting Warmed up. warmed up. 4 o'clock in the morning, and Sucheta is on the watch. Sorry, Gaurav, for the light. And this is how the moon looks. Waiting for the sunrise. You can see. Egg burj is almost over. Sucheta is a pro cook. She's ट्रांसम क्लीन करते वक्त बेचारी मीनाक्षी देखो कितनी थक गई है और रखेंगे 50 पैसे का 50 रुपए काटो उसके. Yeah, this is khichdi which Antara had made. Antara and Sucheta had made on Antara. It's chicken. Look at this. Oh my god. Delicious meal we are going to have. You should... Yeah. Look how tasty it looks. Looks yum. Looks yum. It smells yum. Okay. And this is our lunch. Awesome. Awesome. Yes. Delicious. Actually delicious. So yummy. Okay. Now it's okay. Yes, now it is good. No. Now we will reach Goa. Not back to Bombay. Sucheta on the wheel. She's maintaining the course angle at 165.
Yeah. And the wind speed is 7.2 as you can see. And the depth is 20.9 here. And what else is remaining? Our speed is 3.8 knots. So we have first met Sucheta Jadhav, and she was working earlier with the corporate office for As a head of marketing. as a head of marketing. और 6 years से उन्होंने मार्केटिंग अपना जॉब छोड़ के शी इज़ डूइंग ओनली सेलिंग. एंड अभी वो हमें एक्सप्लेन करेंगी थोड़ा अंतरा के बारे में, विच वी आर सेलिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा. Sucheta, please. Hi, Free Soul Traveler. Welcome on Antara. Thank you. Good to have you aboard. I'll tell you a little bit about our boat. She's a 4-year-old sailboat. We have 2 sails on her. Here you see the mainsail. This one. Yeah, the mainsail. Okay. And ahead of that is the foresail or the genoa. Genoa. Okay. Yeah, foresail or Genoa. And this one is the mainsail. Okay. Yeah. We've been sailing for about 2 days and 2 nights now, and getting closer to Goa every minute. But as you know, with a sailboat, our speed is about 3 nautical miles an hour, which means we get to Goa in anywhere from 3 to 4 days in one trip. This time we're hoping to celebrate New Year's in Goa. Let's see how that goes. As you know, the skipper says boats do not have ETAs, they only have destinations. So it's true of Antara as well. Okay, for dinner we are having aloo, मटर, पनीर. पनीर नहीं है. I don't know. पनीर नहीं है, but आलू मटर. Finally, the most awaited sunrise of 31st December 2023 is here. आज का हमारा तीसरा दिन है यही हमारे अंतरा पे, और सुबह सुबह इतना ब्यूटीफुल सनराइज हम लोग देखा था. पहले दिन हम लोग निकले थे बॉम्बे से, और कल मॉर्निंग में सेकेंड डे मॉर्निंग में पहुंचे थे श्रीवर्धन. कल मॉर्निंग से आज की मॉर्निंग, तीसरे दिन मॉर्निंग में अभी हम लोग देवगढ़ पहुंच रहे हैं. आज रात तक हम लोग शायद वेंगुर्ला पहुंचेंगे. डेस्टिनेशन ओनली मैटर्स, ट्रैवल टाइम ETA doesn't matter. That's what our captain says, Mr. Dilip Donde. And tomorrow early morning we'll reach Bombay after Goa. And आज का 31st का प्लान इधर ही है बोट पे, जो एक्चुअली गोवा में होने वाला था, but we don't mind. Bye. So Manan is teaching bull and knot. This is our time pass as of now. Gaurav is expert. No. I'm the main teacher is here. अभी बजे है 12:40 और बहुत टाइम लगने वाला है गोवा पहुंचने, वेंगुर्ला पहुंचने का भी आज जहाज नहीं है. स्कीपर आज वेंगुर्ला के हाँ स्कीपर आज रात को 30 miles to go. 30 miles. स्कीपर इज ट्राइंग हार्ड बट the wind is not गिविंग कोऑपरेटिंग. 2 आदमी एक पिज्जा. पिज्जा बाय द वे एंड देयर इज गाइस, यू कैन सी द विंडमिल्स देयर. वो देवगढ़ बीच के है. एंड नाउ वी कैन सी हाउ फार वी आर फ्रॉम देवगढ़ बीच. सो दिस इज हाउ इट इज. एंड हियर आई एम इन गौरव. I enjoyed it. Yay! We are enjoying this experience really. Antara was awesome, guys. If you want this experience, you can always contact Sucheta Jadhav. I'll give her contact number in the description, and you will love this.
so many great memories. We celebrated our New Year on Antara 31st December 2023 and this is Happy New Year 2024. Bye. फ्रेंड्स, अंतरा पे जो मैंने सफ़र किया है ये अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। नमस्ते।